Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Quick recap of yesterday's session. Yesterday we discussed about switch statement and then we started with loop instructions. So in that loop, two we have completed, one standard counter-based for loop and while loop. Now few are remaining that we will complete. The next one is do while loop. Okay. Do while loop come under exit control? It is not entry control, exit control. Whenever do while come, just remember example of a restaurant. When you go to a restaurant, you go first, you eat, and then while coming out of the restaurant, that time you do the bill payment. Okay? And while loop, I told you, remember going to a movie. First you take the ticket is checked, and then only you get the entry. Okay? So here the loop body is executed at least once. Okay, at least once it will perform the loop body. And after performing the loop body, at the end, it will check the termination condition. If the termination condition is true, it will keep repeating it. If it is false, stop. So syntax is like this: do statements and while. Now, again, in this case also, remember, if it is a single statement, no need of bracket. You can do it and see. Do, if it's just a one statement, single line statement, no need of bracket. But already I have told you, I've been telling you in past two sessions, two, three sessions, a good habit is put bracket. Make a provision for the future. Though it is containing one line, but still you're making provision for the future. Like in future, if you're going to add some more line, no problem. Just enter and start adding your lines because already you have made a provision of bracket. So do statement while and then the condition. Getting? So directly it will enter inside, perform the statement, then come to check the condition. If it is true, again repeat the statement. So this will go on till the condition doesn't become false. Okay? Okay. Meantime, we will just understand the syntax. Execute code at least once. While loop is executing the code block zero or more time. Zero or more. Whereas do while loop executes one or more. One or more and zero or more is different, remember. So execute code at least once and then repeat till the condition is true. Syntax. Do, then the code which you want to repeat, while, and then the condition. As I said, good practice, put bracket. Okay? So directly it will enter, perform the code at least once, then check the condition. If it is true, it will again continue running the code block. And if the condition is false, it will continue with the remaining code. Okay? As an example, see, I've created one counter num equal to 5. Let num equal to 5. Do while loop is starting. Do block is starting. It enters inside, printing that value num, number, colon, and then num, and then num plus plus. And then it comes and checks over here whether num is less than 5. But already it was 5. So when num plus plus, it becomes 6. Is 6 less than 5? No, it stops. So in the beginning only the condition is false, but still it has executed the code block at least once. Getting? Here I'll give you an example of do while demo.html. Let
suppose num equal to, up to you, like if I'm taking 1, then now do while the standard one. Okay, the skeleton has come. You can just put condition num less than equal to 5. And inside, I'm putting some statement like this console.log your number equal to, and then comma num. Okay, and then num plus plus. Now you can check num is 1. It will print 1, make it 2. Is 2 less than equal to 5? Yes. Comma. Print 2, then make it 3. Print 3, make it 4. Print 4, make it 5. Print 5 and make it 6. And is 6 less than equal to 5? No. The condition will fail and the loop will stop. See. Is it printing num1, num2, num3, num4, num5? You can check in the beginning only if I give 6, or in the beginning only I'm giving 5. Okay. So beginning only it is 5, but directly it is going to enter print 5, make it 6. Is 6 less than equal to 5? No, it will only run once, but at least once. And this num plus plus you can shift here also. If I shift num plus plus there, can I remove this? And then can I remove this bracket as well? So that's what I wanted to say. In do while loop also, if there is a single statement, there is no compulsion of bracket. See, num equal to 1, rerun. Is it printing 1, 2, 3, 4, 5? Because that increment I've shifted in the console only. So it is printing 1 and making it 2 post increment. It is post increment. So side effect is there. Number is going to get incremented by 1. So from this, I hope you got it, that in do while loop also, bracket is not mandatory. But as I said, highly discouraged. It is highly discouraged. You should write brackets. Okay. Chalo. Now next, we will move to next type of loop, that is for in. Okay. Another special loop. Now for in and for off. These are the two special type of for loops provided by JavaScript only, and they are specially used to traverse group objects or collection object. Now, group objects like array, or you have created your own object, which is a JSON object. JSON means, I hope you know it, key value pair, key value, key value, key value. So you have created your object, or you have created your array and you want to traverse it. That time use this. Especially it is for group objects or collection objects. Even for string also it will do, because JavaScript treats string also as a iterable. Getting? Iterable object means when we call a object as a iterable object. Iterable object means it's a group object or it is a collection. If you know something about Java, to Java we have collection. So it is a group object in which many other elements are kept, and you can traverse it using a pointer one by one. One by one, one by one, you can visit the elements. Each and every element in that group you can visit. They are called iterable. So in the string also, character by character, you can traverse. It's a object, then key by key you can traverse. If it's an array, then element by element. Okay. So on such iterable object, such for loops are used. Okay. But this for in will do what work? It will always give you the key of the object. Okay. It's like that. For, okay, X. You can write let over here only. Yeah? If you write let here, the variable is created there only. Scope is only for. So for
temporary variable in and the iterable, whatever iterable is there. Okay, and then the body, the statements. Now what will happen is it will keep giving the key from the iterable after every iteration. For every iteration, it will keep giving you the next key from the iterable. So first time, first key will come in X. Next time, second key, the third key. And when all the keys are visited, the for loop will stop. Getting? So this iterable is containing key value, key value. So after every iteration, what will keep coming in X? The key, first key, the second key, the third key. Now some may say like, if I use this for a string, then in that case, what happens is it just keeps giving, it will keep giving you the indexes, like hello is there. So it will not give you HELLO. It will give their index 0, 1, 2, 3. These indexes will come. And the same if you try to apply on an array, if it's an array of elements. Getting? So in that case also it will give you indexes. What will come in X? The index 0, 1, 2. Not the value at that index. It will give the index. Okay? So remember that. And suppose you want value, you don't want the keys. Then we have another for loop, for off, not for in. For off is added in JavaScript very later. Later version of JavaScript has added. The original version, the very first version, from very first version, this for loop is provided. Get it? So for in loop, iterate. Iterate means traverse or visit each and every element one by one in a group object or in a collection. So if you have a collection, you have a sequence, or if you have a group object or iterable, and in that you want to visit one by one elements, then use this. So iterate over object properties. Properties means you're understanding that the key part will come, not the value. Object key will be given. Key is the property and the value is the value of that property. Getting? Syntax is like this. See, for temporary variable in object. For every iteration, what will come in the variable? Next key. For the first time, first key will come. Next time, second key. Next time, third key. When all the keys are visited, the for loop will stop on its own. Okay, as an example, see, I've created one object called person. Okay, internally in the memory, it will create a two-column table sort of thing. Okay, like this. Here there will be name, then the value is Ram, age, value is 30, city, value is Pune, and then the reference of that is kept in one variable called person. Person is that object which is containing the reference of this key value, key value, key value table. Okay, now that person object, you're using it in a for loop. See, for key in person. Key is a temporary variable. Let I have written. So first time what will come in key? Name. Second time what will come in key? Age. Third time what will come? City. So after every iteration, each key will keep coming in that temporary variable. So पहली बार की में क्या आ जाएगा? Name आएगा. दूसरी बार age आएगा. तीसरी बार city आएगा. Getting? So once you get the key, you can use that key in a square bracket to get the value. देखो person of key. Person, ये person में ये पूरे टेबल का रेफरेंस है. तो person of key, अगर की में name है, तो ये टेबल में name की वैल्यू लाके देगा. That is राम. डॉट से भी एक्सेस कर सकते हो, स्क्वायर से भी. पर्सन ऑफ एज 30 लाके देगा. पर्सन ऑफ सिटी पुणे लाके देगा. वो हम लोग प्रिंट करें. गेटिंग गाइस?
Okay, so I hope you're understanding. Quick illustration I'll give you for in demo. ओके, पहले यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लाइक पर्सन ऑब्जेक्ट बनाए. फर्स्ट नेम, माय नेम ओनली आई स्टोर. एज, ओके, देन सैलरी और सिटी. डन. I've created an object with key value, key value, key value pair. Key and a value, key value, key value. It is like a dictionary in some other languages. Like in Python, it is a dictionary. Here they call it as JSON. That is JavaScript object notation. JSON object. All are in the key value pair. Now you'll say value, can it be a function? Yes. You can give a reference of a function as a value. I'll teach you when we'll come to the topic objects. Now we want to learn only loop. So I'm creating one for loop. See, for in I'm taking. See how smart enough it is. It has given you a skeleton. Okay, I don't need so much. For const key. Const key means what? Once the value is stored, inside you cannot change it. Okay, and in place of object, I'll give person. So after every iteration, what will keep coming in key? The key part. First time name, then age, then salary, then city. Okay, we will be printing it. Console.log. Suppose I'm printing name, then colon, and then person of key, not name, key. Okay, so I'm writing like that. Key, colon, and then person of key. So first time in key, name is going to come. So name, colon, and person of name. So what is person of name? Ajit. Next time key will contain age. So person of age will be 49. Next time salary, person of salary, 45,000, like that. Okay? See, is it displaying each key and the value of that key? Key and the value of the key. Key and the value of the key. This for loop is applicable for array as well. But in case of array, it will not give you values, guys. Suppose numbers equal to 10, 67, 80, 12, 111, 34, 59, 210, like that. So it is an array of numbers. But on this also, if I try to use the same for loop for in, okay, right? So for k in numbers. But what happens is it is not going to give you values. Remember, guys, in that key, what will come? The index will come. Getting? It is not going to give you 10, 67, 80, 12. It will give the index 0, 1, 2, like that. Okay. So suppose I print it console.log key, then colon, and then I'm printing NOS of key. Okay. So NOS of key means NOS of 0. First time, what will be the key? This index 0, 1, 2, 3. So 0 and NOS of 0. What is NOS of 0? 10. Then 1, NOS of 1, 67. Getting? You can check. See, 0, 10, 1, 67, 2. This way. Same thing if you try for string as well. Like let s equal to. And here I'm giving let us
learn JavaScript. Okay. And on this also, if I try to write the same for loop, for in. Okay. And here that string is there, S. Okay. In this also, you think as if like LET will come. No, it will just give positions 0, 1, 2, like that. Understanding? Therefore, if I write console.log key, then colon, and then the third value is S of key. Okay. So first time key is 0. So S of 0 is L. S of 1 is E. S of 2 is T. Like that. Okay. See. Can you see? 0 पे L है, 1 पे E है, 2 पे T है. तो कहना क्या चाहता हूं कि ये इन वाला फॉर लूप अगर आप यूज करते हो तो आपको हमेशा कीज मिलेंगे. लाइक ऑब्जेक्ट पे चलाया तो ये की मिलेंगे. अरे पे चलाया तो उसके इंडेक्सेस मिलेंगे. स्ट्रिंग पे चलाया तो भी स्ट्रिंग के इंडेक्सेस. अभी अगर आपको वैल्यूज चाहिए, if you want values, then there is another for loop called for of. ठीक है? So can you give me confirmation so that मैं आगे वाला for loop भी बता दूं? For of. Yes, go ahead, please. Okay. Next is about for of. अभी for of specially कब use करना है? In case of array or in case of string to get the values. You don't want the indexes. Means वो key नहीं चाहिए, हमें value चाहिए. तो फिर ये यूज करो. Correct? See here. Iterate over iterable objects like arrays and strings. Strings and arrays पे ये specially use होता है. ठीक है? उस केस में आपको फिर instead of वो index 0, 1, 2, 3, you'll get the value directly. Correct? Okay. See here. For variable of iterable. Now that iterable can be an array, it can be a string. What will keep coming in this variable after every iteration? Value. Like if I give you a string, and in string there is let us learn JavaScript. So directly L will come, E will come, T will come, space. It will not give you position. Direct value only will come in this variable. Getting? As an example, see. This is an array of strings. Is it? In JavaScript, array can be directly created by enlisting values in a square bracket. You have a separate topic, don't worry. We will be coming to a topic about arrays. There will be discussing about how to create arrays and then what are different methods of array. Okay, but that we will go after learning functions and all. So first we have to learn about functions and all that things. Now we want to learn for loop, therefore just a short introduction. So this is the array of strings and then you are applying this for of on this array. Now after every iteration, what will come in this temporary variable fruit? One by one value from that fruits. Fruits is that array. So first time apple will come in it. Next time banana. Next time orange. Getting? So one by one, what will come in it? Each value. It won't give index, remember. Instead of, if you write in, it will give that position 0, 1, 2, like that. Now it will not give position. Now it will give you values only directly. Okay? ठीक है? So concept that is also clear. Suppose for example, S is equal to hello world. And now you are writing for off. See, for off. It is const element of and the object.
object is S. You're directly printing it. Console.log and then element. डायरेक्ट एलिमेंट आएगा. ठीक है. प्रीवियस स्क्रिप्ट नहीं रन. Can you see? H E. फिर L two times था इसलिए to reduce the space on the printing, it has just accumulated it. 2L means it is saying L is two times. Then O, then space, then WRLD. ओके देखो अगर यहाँ मैंने 3 एक्सक्लेमेशन डाले हुए तो वो 3 प्रिंट करने की जगह पे काउंट देगा 3 एक्सक्लेमेशन. Can you see? 3 exclamation. It is just reducing the space. This is just a console output. This is a debug output. Okay. So just to reduce the space here, it is just grouping and showing. Now on array I did, sorry, on the string I did. You can do it on array as well. NOS. Yeah, suppose for example, names equal to. Okay. I'm giving Tom, then Bob, then Jack, Ram, Jay, Anand. And then if I try put it on a for loop for off, const element of instead of object names, and then print and see console.log element. See, is it printing all the names? Tom, Bob, Jack, all whatever are there. Try to do it on an object as well. ठीक है? ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था चेक करो कि does it give values. ये values देगा की नहीं की चाहिए रहेगा तो in यूज करो. करें तो for of const element of person. See, it is saying uncaught type error. Person is not iterable. तो person पे नहीं चलेगा. It is just a object. It is not iterable. इसको convert कर सकते हैं. I think there is a provision. Okay, I'll tell you. Now it is not working because इसलिए मैंने कहा कि try on this also and check so that you come to know the errors and all. So person is not iterable. It says you cannot use it in this type of loop, off type loop. You can do it, I guess. You can convert it into a iterable and then do it. But okay, by default, it is not working. Okay. Then moving to the third category of control flow. In control flow, 3 types of instructions I told you. Conditional instruction, in which we saw if else, multiple if else, switch, they all come under conditional. Second, iterative or loops, in which we saw 5 types of loop: for loop, while loop, do while loop, for in and for off. Now, third category is transfer instructions, also called as jump instructions or transfer. And these are for transferring the flow of execution from one point to some another point. Meaning like you are within the loop, and in the loop the execution is going on, and at some point you have reached, and from there the flow you want to transfer somewhere else, like directly outside of the loop or directly to the beginning of the loop. So you can transfer the flow to some another point of the code by using jump instructions. Now, what all come in that category? So first is break. So we'll learn about break. But jump statements, these statements alter the normal flow of execution.
Means normally one by one the statements are running. So it will just alter the flow of execution. Okay. Like the loop is going on. So you just want to jump out of the loop. So the normal flow of execution is modified. Now in that, the first one come that is break. There are many. Break is there, then continue is there. Then we have in try catch also there is something called raise. Then we will have return. So return now I won't tell you. When we will learn functions, that time I'll tell you about return. Okay. So next is break. First in this category is break. Break you can use in a switch. Break is allowed in a switch instruction to come out of the switch when the label is matched. Like in that switch, you're passing an expression. If you remember yesterday's knowledge, so there is case and some value, constant value. So if the expression matches with that value, it will run the code associated with it. And you want after running the code, it should come out of the switch. Then we put break. Because if break is not put, it does fall through. Fall through means what you know. It continues running the next cases. Next cases run करते जाएगा. ठीक है? So to come out of break, to come out of switch, we have to use break. एक. And second, if you want to terminate loops, any type of loop, any of that five loops, for loop, while loop, do while loop, for in, for off, any type of loop if you want to terminate prematurely. Okay, then use break. So within the loop body, when the JavaScript engine is running the statement and it encounters break within the loop body, if your JavaScript engine encounters break, it will stop execution of the loop and the control is transferred directly to the first statement, which is outside the loop body. लूप बॉडी के बाहर जो भी पहला स्टेटमेंट है कंट्रोल वहां ट्रांसफर होगा. ठीक है. तो दिस इज द लूप बॉडी. विद इन द लूप बॉडी व्हाट इज एनकाउंटर्ड ब्रेक. एक लूप बॉडी चल रहा है. लूप बॉडी में ब्रेक एनकाउंटर हुआ. तो द मोमेंट ब्रेक इज एनकाउंटर्ड बाय योर जावास्क्रिप्ट इंजन, इट विल स्टॉप दैट लूप. लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा and control directly loop के बाहर transfer होगा to the first statement, which is outside the loop body. And from there, the execution will continue. Getting? But remember, you cannot use break in a alone if. Just एक if condition दिया है and break लिखा है. तो अगर ये ऐसे alone if में लिखा है, if condition break, it is not going to work. It's a syntactic error. But if this if is part of some loop, let it be a while loop or a for loop, whatever. If this if belongs to a loop, then it is okay. Because actually this break is not going to break if. It is going to break the nearest loop. Break ये nearest loop को ही terminate करने वाला. तो आप कहोगे फिर if में क्यों लिखा? Conditionally बाहर आना है ना. बाहर तो आना है, but कब? जब वो condition true है. तो condition check करने के लिए मुझे if लिखना ही पड़ेगा. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक, बट ब्रेक किसको ब्रेक करेगा? नियरेस्ट लूप को ही ब्रेक करेगा. नियरेस्ट लूप मीन्स वो वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, कोई भी टाइप का लूप. ठीक है. हाँ, अभी ब्रेक विथ लेबल्स एंड ऑल है जो एडवांस जावास्क्रिप्ट ने दिया. एडवांस जावास्क्रिप्ट मीन्स मॉडर्न जावास्क्रिप्ट. लेटर नए वर्जन के जावास्क्रिप्ट ने दिया है प्रोविजन ब्रेक विथ अ लेबल. उसको हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ इतना ही याद रखो. तो ब्रेक एक तो किसमें आ सकता है? स्विच केस, टू टर्मिनेट दैट स्विच. And second, break can come in any type of loop. Understanding? किसी भी टाइप के लूप में ब्रेक
आ सकता है। ओके, ठीक है। सो ब्रेक, exit a loop, or switch statement immediately. So whenever in a loop, what is encountered? Break. Or whenever in a switch statement, what is encountered? Break. It will simply stop the execution of that switch or that loop, and the control is transferred directly to the first statement outside that switch or loop. वो लूप बॉडी के बाहर या वो स्विच के बॉडी के बाहर जो भी पहला स्टेटमेंट है वहां कंट्रोल ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल देखो, एक स्टैंडर्ड फॉर लूप लिखा है मैंने। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। लेट लिखा है मीन्स ये वेरिएबल सिर्फ फॉर लूप तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर लूप खत्म, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय, इसका स्कोप सिर्फ फॉर लूप तक ही है। बिकॉज लेट अलाउज यू ब्लॉक लेवल स्कोप। हाँ, इस जगह पे वेयर लिखा रहता था तो ये आई बाद में भी एक्सेसिबल है, तो वो सब भूलो मत। हाँ? वो कंसेप्ट भी हमने पढ़े हैं। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, राइट। 3 इक्वल लिखा है मीन्स कास्टिंग नहीं होगा, डेटा टाइप पक्का चेक करेगा, आई का डेटा टाइप एंड 5। 3 इक्वल है ना, 3 इक्वल मीन्स इट विल नॉट डू कोएर्जन, इट विल चेक द डेटा टाइप ऑल्सो एंड द वैल्यू ऑल्सो। So first I is initialized to 0, then it comes and check, is 0 less than 10? Yes, come inside. Is it equal to 5? No. Then come down. यहाँ से यहाँ, print 0, and then go to I plus plus, and again check. अभी 1. Is 1 less than 10? Yes. Is it 5? No. Then print 1. Make it 2. 2 less than 10? Yes. But is it 5? No. Then print 2. ऐसे ही print 3, print 4. अब ला प्रिंट 4 हो गया, फिर आई प्लस प्लस 5। इज 5 लेस देन 10? यस, कम इनसाइड। बट इज 5 इक्वल टू 5? यस, ब्रेक। अब देखो ये बेस्ट एग्जांपल है कि मैंने ब्रेक लिखा है भले इफ में ब्रेक लिखा है, बट फिर भी वो ब्रेक किसको ब्रेक करेगा? इफ को ब्रेक नहीं करने वाला है, नियरेस्ट लूप। तो नियरेस्ट लूप से ही बाहर आ जाएगा। तो ये लूप कब तक प्रिंट करेगा? 0 से 4, एंड जैसे ही आई 5 होता है, ब्रेक। प्लीज रिमेंबर, ब्रेक इज नॉट टू ब्रेक इफ, ब्रेक इज टू टर्मिनेट स्विच और टू टर्मिनेट लूप। एक तो लूप को टर्मिनेट करने के लिए या स्विच को। फिर आप कहोगे कि ब्रेक को इफ में लिखते क्यों है? तो हमें लूप को टर्मिनेट करना है, बट कंडीशनली टर्मिनेट करना है ना। अगर अज्यूम करो ये कंडीशन नहीं, ये डायरेक्ट ब्रेक, तो वो अंदर आते ही ब्रेक हो जाएगा ना डायरेक्ट। तो कुछ कंडीशन चेक करके ही ब्रेक करना है। तो कंडीशन चेकिंग किस में करोगे? इफ में। अगर ट्रू है तो ही ब्रेक करो। ठीक है। तो अलोन इफ में ब्रेक नहीं आ सकता है। ठीक है, चाहिए तो देखो। See guys, if I try to write 10 less than 20 and break, is your interpreter giving error? Means इंटरप्रेटर नहीं, आपका ये VS कोड ही प्राइमरी चेकिंग करता है। मीन्स आपने अभी तक उसको इंटरप्रिटेशन के लिए दिया भी नहीं है, उसके पहले ही आपका VS कोड ही जो प्राइमरी चेकिंग कर रहा है उसमें एरर बता रहा है। यानी देखो, a break statement can only be used within an enclosing iteration or switch statement। कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये बोल रहा है कि एक तो ब्रेक कोई भी इटरेशन के अंदर आ सकता है या स्विच के अंदर, अलोन इफ में नहीं। हाँ, बट अगर इसको मैंने एक वाइल लूप में डाल दिया, देखो वाइल ट्रू लिख देता हूं, ठीक है, ब्रैकेट, इज द एरर गॉन? इमीडिएटली एरर चला गया, क्योंकि अभी ये ब्रेक किसके अंदर है? एक एनक्लोजिंग लूप के अंदर। ठीक है, तो कंसेप्ट वो भी क्लियर है, वो मिस्टेक कभी नहीं करोगे। फॉर, अगर आपको एक सिंपल काउंटर फॉर लूप चाहिए,
Here I'm taking I equal to 0, I less than 10 suppose, I plus वो इंडेक्स ही लेता हूं मैं, ठीक है. If index double equal to 5, break. I have a habit of putting bracket everywhere. Irrespective वो एक लाइन का लॉजिक रहने दो, ब्रैकेट डालो, गुड प्रैक्टिस. console.log and index. Okay, so in this case, will it display only till 4? And the moment it becomes 5, it will stop. Can you see? 0 print हुआ, 1 print हुआ, 2 print हुआ, 3 print हुआ, 4 print हुआ, 4 print हुआ, फिर I plus plus 5 हुआ, 5 less than 10 है, अंदर आया, but 5 equal to 5 है, break and loop के बाहर आ गया. ठीक है? Okay, can you give me confirmation about break? Then we will learn about continue. फिर कंटिन्यू के बाद यही चीजें लेबल फॉर्म में भी है. फिर वो लेबल्ड ब्रेक, लेबल्ड कंटिन्यू का क्या फायदा है वो भी बताता हूँ, डोंट वरी. Yes, it is clear. Then moving ahead to continue. Continue is also a flow transfer instruction, and continue can come only in loops, any type of iteration. It is not even in switch case. स्विच केस में भी नहीं चलेगा. ठीक है, अभी बोलोगे स्विच केस में कंटिन्यू लिखा तो वो स्विच किसी लूप में चाहिए तो चलेगा. Getting? So basically continue can come only in any type of loops. Means अगर मैंने if condition continue लिखा है, alone if में error है, बट इसी को अगर किसी enclosing loop में डाल दिया तो चल जाएगा. ठीक है. Now what does continue do? It is the opposite of break. Whenever in the loop body your JavaScript engine encounters break within a loop body, when your JavaScript engine, it is running the statement one by one and it encounters break, it simply stops the loop. It exits the loop and takes the control directly to the first statement outside the loop body. Isn't it? Now, instead of break, if your JavaScript engine encounters continue. So your JavaScript engine is running this loop body line by line and it has encountered continue. It will skip the execution of the remaining statement. Remaining statements ka execution skip and it will come to the beginning of the loop for the next iteration. जैसे अगर for loop है तो वो डायरेक्टली I प्लस प्लस को आ जाएगा. while loop है तो डायरेक्टली कंडीशन चेकिंग के लिए आएगा. अंडरस्टैंडिंग? अगर फॉर इन या फॉर ऑफ है तो डायरेक्टली अगले एलिमेंट के लिए जाएगा या अगले इंडेक्स के लिए जाएगा. अगला इंडेक्स या अगला एलिमेंट. अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. एंड करंट इटरेशन के जो बचे हुए स्टेटमेंट है वो स्किप करेगा. It is like you attend the session every day. Every day you join at 5 o'clock till 6 o'clock. But someday some technical problem arise or you have some emergency. So half lecture you attended and half you skipped. Means halfway आपने skip कर दिया. तो उस दिन का आधा सेशन नहीं अटेंड. बट कल आप वापस अगले सेशन के लिए बिगिनिंग से ज्वाइन कर रहे हो तो वो कंटिन्यू. एंड अगर आपने तय किया कि जावास्क्रिप्ट ये मेरे बस की बात नहीं है तो ब्रेक छोड़ देते हो और फिर कल से आते ही नहीं हो. ऐसे भी होता है स्टूडेंट में. देयर आर पीपल दोस हु अटेंड फ्यू सेशंस एंड देन दे रियलाइज दिस इज नॉट माय निश, ये मेरा जॉनर ही नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं. करेक्ट. तो इट इज इंडिविजुअल चॉइस. ठीक है. तो यहाँ क्या कह रहा हूं? द मोमेंट कंटिन्यू एनकाउंटर इट विल स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, come back to the beginning of the loop for the next iteration. अगर for loop है तो डायरेक्टली I++ को आ जाएगा. Getting? For in या for off है
तो अगली एलिमेंट या अगला की फेच करके देगा। डू वाइल लूप है तो डायरेक्ट कंडीशन चेकिंग के लिए आ जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन चेकिंग। वाइल लूप है तो भी डायरेक्ट कंडीशन चेकिंग के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिमेनिंग कोड स्किप करते हो यूजिंग कंटिन्यू। So skip the current iteration. Current iteration means current कोड जो एग्जीक्यूट हो रहा था, तो उसके जो बचे हुए स्टेटमेंट है वो skip. So skip the current iteration and move to the next one. डायरेक्टली अगले इटरेशन को पहले से शुरू करो। ठीक है, देखो वही फॉर लूप है जो प्रीवियसली लिखा था ना ब्रेक के लिए, वही फॉर लूप सिर्फ ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू डाला। ठीक है, तो चेक करो। पहली बार आई कितना है, 0। इज 0 लेस देन 5? यस, अंदर आएगा। बट इज इट इक्वल टू 2? नो, तो प्रिंट 0। कम टू आई प्लस प्लस 1। इज 1 लेस देन 5? यस, बट इज इट इक्वल टू 2? नो, तो कम डाउन एंड प्रिंट 1। आई प्लस प्लस अभी 2 हो गया। इज 2 लेस देन 5? यस, कम इनसाइड। बट इज 2 इक्वल टू 2? यस, कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स डायरेक्टली आई प्लस प्लस, प्रिंटिंग नहीं करेगा। It will skip the printing of 2 and directly I plus plus 3. Is 3 less than 5? 3 less than 5. Yes. Come inside. Is it 2? No. Print 3. Then I plus plus 4. Is 4 less than 5? Yes. Is it 2? No. Then print 4. Plus plus 5. Is 5 less than 5? No. For loop stop. But in this for loop, it has skipped printing of 2. Because when I was 2, we wrote continue. So it has skipped the remaining code and it has come directly to the next iteration. तो डायरेक्टली अगले इटरेशन को आया और करंट इटरेशन के बचे हुए स्टेटमेंट स्किप किए। ठीक है, होप इट इज क्लियर। सी, so simple counter based for loop. So for I equal to 0 to I equal to 0 to I less than, I'm keeping 5 I plus plus. Inside I'm printing the value console.log, value of index, that is I. And before that, I'm going to put one condition, simple if. Condition is index double equal to 2. Continue. ठीक है, can you see? Is it printing 0, 1, 3, 4? Only the printing of 2 is skipped. Has it skipped printing of 2? Because when index has become 2, continue, तो डायरेक्टली आई प्लस प्लस को आ गया, ये प्रिंटिंग का पार्ट स्किप किया। ठीक है, ओके, तो ये पार्ट भी क्लियर है, तो मुझे कंफर्मेशन दो। बहुत चीजें और देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न इन जावास्क्रिप्ट। फिर फंक्शंस पढ़ने हैं, फिर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स में क्लास कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, सब पढ़ना है। फिर इनबिल्ड ऑब्जेक्ट्स दिए ना, लाइक डेट है, स्ट्रिंग है, अरेज है, वो भी देखना है हमें, राइट? ठीक है, तो Yeah, कंफर्मेशन दोगे तो मैं अगले इसके लिए जाता हूँ। yes, नाउ sir. द न्यूअर वर्जन्स, नए वर्जन का जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इन्होंने फीचर्स ऑफ लेबल भी दिया है। मींस यू कैन गिव अ लेबल टू अ स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट, भले वो कंसोल डॉट लॉग है, ऐसे कोई भी कैलकुलेशन का स्टेटमेंट है, या कोई ब्लॉक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ओके।
So labels are identifiers. What are labels? They are identifier. Identifier means they are meaningful names. Identifier concept पढ़ा है हमने जब elementary जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग शुरू की तब हमने देखा आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर नेमिंग रूल you remember or no data types keywords so identifier is a name given to some programming elements like name given to a variable name given to a function name given to a class name given to a label they identifier तो लेबल भी एक आइडेंटिफायर है एंड ये लेटर वर्जन का जावास्क्रिप्ट कहता है कि आप स्टेटमेंट्स को लेबल दे सकते हैं getting you have any statement तो उसके पहले ऐसे लेबल दे सकते हो लेबल एक क्या है आइडेंटिफायर है कोई भी मीनिंगफुल नेम है एंड लेबल ऐसे कोलन से देना है ये जनरली उन्होंने दूसरे लैंग्वेजेस से ऐसे कॉपी करते करते आए लाइक लेटर जावा ने दिया है जावा ने ओरिजिनली पहले से ही दिया है तो वहां से में भी इन्होंने ये नए वर्जन के जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किया तो लेबल दे सकते हैं ऐसे लेबल कोलन एंड देन द स्टेटमेंट ओके इट कैन बी टू एनी स्टेटमेंट मीन्स आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड तो इसके आगे भी लेबल लिख सकते हो कोई सिंपल ब्लॉक लिखा है बस ब्लॉक ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस तो यहां भी लेबल दे सकते हो या लूप लिखा है कोई फॉर लूप लिख रहे हो ठीक है तो इसके आगे भी लेबल दे सकते हैं ओके बट आप कहोगे ये लेबल देने का फायदा क्या है स्पेशली इसका फायदा मेन फायदा इसका होता है यू कैन यूज दीज लेबल्स इन ब्रेक एंड कंटिन्यू इसका बेस्ट यूज वहां होता है कि इन लेबल्स को किस में यूज करो ब्रेक स्टेटमेंट में ऐसे अब तक हम सिर्फ ब्रेक लिख रहे थे यू कैन राइट ब्रेक एंड लेबल कंटिन्यू एंड लेबल but you will say what is the benefit of using this label in that break you get a choice of terminating the loop getting meaning normally when you write break it will terminate the nearest loop assume करो एक लूप है लूप के अंदर लूप है लूप के अंदर लूप है ऐसे नेस्टेड लूप है एंड एकदम इनर मोस्ट लूप में आपने सिर्फ ब्रेक लिखा है तो डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू टर्मिनेट द नियरेस्ट लूप बस नियरेस्ट लूप से बाहर आएगा डिफॉल्ट बट सपोज यू वांट अ चॉइस दैट you should be able to come out of two loop directly three loop out you want to come two loop out then what you can do you can give labels to these loops so to this loop I'm giving a label you're allowed to give label to any statement so while loop or for loop is also a label sorry a statement so as it is a statement you can give a label to it so here also I'm giving some label suppose here also I'm giving some label and when I write break and I mention the label so suppose I'm mentioning label x it will directly terminate the loop with that label so you have a choice of terminating the loop whichever loop you want you can terminate by mentioning that label because when we don't do this we just write break it is going to terminate the nearest loop default वो nearest loop से ही बाहर आता है तो आपको चॉइस चाहिए कि दो लूप बाहर आए तीन लूप बाहर आए तो ऐसे लेबल दे सकते हो कुछ लैंग्वेजेस में नंबर कंसेप्ट है कुछ शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह अगर की रहेगी शेल सी शेल स्क्रिप्टिंग एंड ऑल जो यूनिक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे शेल स्क्रिप्टिंग करता है उसमें भी होता है वहां नंबर लिखने का प्रोविजन है या पीएचपी अगर पढ़ा रहेगा तो वहां नंबर होता है ब्रेक टू ब्रेक थ्री लाइक दैट तो थ्री लिखा तो थ्री लेवल आउट आएगा टू लिखा तो टू लेवल आउट तो वहां नंबर का टेक्निक है यहाँ लेबल्स लिखने का टेक्निक है सेम इज द केस फॉर कंटिन्यू ऑल्सो कंटिन्यू एंड लेबल so normally when you don't give label you write continue it will skip the remaining and come to the next iteration of the nearest loop only
नियरेस्ट लूप के ही नेक्स्ट इटरेशन को आएगा। बट कंटिन्यू एंड लेबल का तो इट विल कम टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द स्पेसिफाइड लूप विच एवर इज हैविंग दैट लेबल। जो भी लूप जिसको वो लेबल है उसके नेक्स्ट इटरेशन को आ जाएगा। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है बाय गिविंग लेबल्स। ठीक है, तो दैट बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर। इसका एप्लीकेशन बाद में देखेंगे, बट एटलीस्ट ये कंसेप्ट देख लेते हैं। लेबल्स आर identifiers. They are meaningful names given. They are meaningful names, user defined names. So they are identifiers associated with any statement. It can be console.log और उसके आगे लेबल लिखा है, करेक्ट? या फिर एक सिंपल ब्लॉक है उसके आगे लेबल, while लूप उसके आगे लेबल, कोई भी स्टेटमेंट के आगे लिख सकते हो। यू कैन यूज दीज लेबल्स, बट ओके वो स्टेटमेंट को लेबल दिया है, बट वो लेबल यूज कहाँ करने का? तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन उसका है कि मेक यूज ऑफ दैट लेबल इन ब्रेक एंड कंटिन्यू। एंड ब्रेक में वो लेबल या कंटिन्यू में वो लेबल कब फायदा होता है? स्पेशली नेस्टेड लूप्स। देयर यू हैव अ चॉइस ऑफ टर्मिनेटिंग द लूप, यू हैव अ चॉइस ऑफ विच लूप यू वांट टू टर्मिनेट। ऐसा बोलना चाहिए कि कौन सा वाला लूप, नियरेस्ट लूप, एक लेवल बाहर, दो लेवल बाहर, तीन लेवल बाहर, कितने लेवल का नेस्टेड लूप आपको टर्मिनेट करना है, वो लिख सकते हैं। जनरली कोडिंग में तीन लेवल नेस्टिंग के ऊपर कुछ लॉजिक्स नहीं रहता है। दुनिया के सारे लॉजिक्स तीन लेवल नेस्टिंग लूप में खत्म हो जाते हैं, राइट? फोर्थ लेवल मीन्स एकदम एक्सेप्शनल केस हो गया। दुनिया भर के अब चेक कर सकते हो, दुनिया भर के सब प्रॉब्लम्स कितने टाइप के लूप में सॉल्व हो जाते हैं, थ्री लेवल नेस्टेड लूप। ठीक है, तो देखो सिंटैक्स इस तरह से, स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट, उसके आगे लेबल लिखना है, लेबल कोलन। ठीक है, तो हाउ टू यूज इट इन अ ब्रेक एंड अ कंटिन्यू, दैट वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। ब्रेक में लेबल, कंटिन्यू में लेबल, या सिंपल ब्लॉक में एक कोई भी एक एनोनिमस ब्लॉक है तो उसको लेबल दिया है तो कैसे। ठीक है, वो देखेंगे एंड फिर फंक्शन शुरू करेंगे। बट मुझे लगता है फंक्शंस के पहले इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, सिंपल प्रोग्राम्स, सो दैट एवरीथिंग इज रिकॉल्ड। ठीक है, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। एंड फिर एक्सरसाइज देखने के बाद फिर फंक्शंस में डाइव करेंगे।